Assalamu alaikum, my dear students. This is your English teacher from Sir Syed Children's Academy, Miss Mehak Fatma. This is our lecture for grade 5 and this lecture is all about worksheet of English language. So before starting our worksheet, we must know that how to solve worksheet. So here your instructions are: do each exercise in your given worksheet. Use pencil to solve your worksheet. Write your name, class, section, group and date on the top of your worksheet. आपको इंग्लिश लैंग्वेज की वर्कशीट का सारा काम वर्कशीट में ही करना है. आपको पेंसिल यूज करनी है. Do not forget to write name, class, section, group and date on the top of your worksheet. Okay, so exercise number 1 is all about comprehension. First, we will read this passage and then we will answer the following questions. So, let's read it together, students. Mrs. Brown grew a great big onion. Every day, Mrs. Brown watered her onion. Winter became. It's time to make my famous onion soup, said Mrs. Brown. She dug up her onion with a bulldozer and cut off its top with a chainsaw. I'm tired out after all this onion work, said Mr. Brown. I will make my soup in the morning. In the night, Mrs. Brown woke up. It was Bulger Bonnie and Bulger's gang. Oh, cried Mrs. Brown, it's no use screaming. We are offering your money, growled Big Bulger Bonnie. You Bulgers are looking thin, said Mrs. Brown. Would you like me to make a pot of onion soup? Yes, shouted Bulgers. Mrs. Brown began to peel her great big onion. She cried a little. The burglars cried like watering cans, pitter-patter. Mrs. Brown began to chop her onion. She cried a little. The burglars cried like a garden horses. Mrs. Brown began to slice her onion. She cried a little. The burglars cried like a floods and thunderstorms. Run, run, cried Big Bulger Bonnie. Run away from Mrs. Brown and her onion. All the burglars ran away. Mrs. Brown smiled and a little. Then she went on making her famous onion soup. So here your small passage ends. अच्छा, what's the meaning of this passage is Mrs. Brown जो थी उन्होंने एक बहुत big onion को ग्रीव किया था. एवरी डे वो उसे वाटर करती थी. जैसे विंटर आया सो मिसेस ब्राउन थॉट कि अब मुझे अपना फेमस अनियन सूप बनाना चाहिए. बट वो बहुत थक चुकी थी. वाई, वो क्यों थक चुकी थी? बिकॉज शी डग अप अनियन विद अ बुलडोज़र. इतना बिग अनियन था कि उसने उसे बुलडोज़र से उसे डिग करना पड़ा एंड देन उसका टॉप को कट करना पड़ा. बट अनियन के इस काम को करके उसे डिग आउट करके वो बहुत थक चुकी थी. सो शी थॉट कि मैं इसे कल सूप बनाऊंगी. जब वो सोई तो रात में देयर वाज अ गैंग ऑफ बर्गर बोनी. दे केम एंड दे सेड कि भाई वी वांट योर मनी, वी आर हेयर फॉर योर मनी. तो मिसेस ब्राउन ने उसे एक ट्रिक यूज़ की एंड शी सेड कि तुम लोग बहुत थिन लग रहे हो, क्या तुम लोग मेरा फेमस onion soup पियोगे? So they all were ready and they said yes yes हम पियेंगे. जैसे ही वो किचन में गई उन्होंने पील करना शुरू किया. पील करना मतलब उसे छीलना शुरू किया. So that was so big. Mrs. Brown तो थोड़ा सा रोई but burglars were crying like watering can, pitter patter. जैसे आप देखो ना watering can होते हैं जो plants को water करते हैं, वो कैसे वाटर को डालते हैं, that's the way. ठीक है. फिर मिसेस ब्राउन ने इसे चॉप करना शुरू किया अनियन को. फिर वो थोड़ा सा रोई बट बर्गर बॉयज वर क्राइंग लाइक गार्डन हॉर्सेस. उसके बाद मिसेस ब्राउन ने दोबारा अनियन को स्लाइस करना शुरू किया. सो शी क्राइड अ लिटिल बट बर्गर बॉयज जो थे, उनका जो गैंग था, वो फ्लड्स और थंडरस्टॉर्म के जैसे रोने लगा. एंड दे सेड रन रन, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो.
इतने में सारे बर्गर बॉयज भाग गए एंड मिसेस ब्राउन स्माइल और उन्होंने वो अपना फेमस अनियन सूप बनाना शुरू कर दिया. So here your passage ends and the following questions are: How did Mrs. Brown dig her onion? Mrs. Brown ने कैसे अपने onion को dig किया था? You have to write answer by yourself on the worksheet. What happened in the night? Night में क्या हुआ था? How did Burger cry when Mrs. Brown began to peel the onion? जब Mrs. Brown ने onion को peel किया तो फिर बर्गर बॉयज कैसे रो रहे थे? Suggest the suitable title for the story. ये जो शॉर्ट स्टोरी थी आप इसके लिए कोई भी अपनी तरफ से एक suitable title सजेस्ट करें. Write the present form of. आपके पास 5 words लिखे हैं and all of them are in past form. So you have to write the present form of these words. Cried, began, said, grew, went. Exercise 2 is all about opposite. So the question for opposite is: Rewrite the sentences substituting the opposites of the bold words. आपको इन sentences को rewrite करना है और जो bold words दिए हुए हैं उनके opposites करके sentence को पूरे rewrite करना है. ठीक है? He loves his pet. Alia liked to see the ancient places. Lions have sharp teeth. Ahmed accepts his friend's proposal. I don't want to eat fresh fruit. After that you have to do exercise 3 and 4 which are about possessive form and prepositions. Question number 3 for possessive form is: Insert the possessive form where required. आपको पता है कि possessive forms क्या होते हैं, how to insert it. ठीक है? Our dash meeting was held during lunchtime. We didn't see the dash signal. The dash face was wet with tear. We stayed a week at our dash farm. We stayed a week at our dash farm. The dash institute is near my house. After that you have to circle the preposition which is question number 4. आपको इन 5 sentences में से preposition को circle करना है. The bag is under the table near window. He drove over the bridge. There is some food in the fridge. They were sitting by the tree. I walked down the street. So exercise 5 and 6 is all about capital letters and adverbs. Capital letters, question number 5 is: Rewrite these sentences using capital letters where necessary. आपको इन sentences को rewrite करना है और capital letters लगाने हैं जहाँ necessary है. Michael invited John to the party. I have only just finished reading Oliver Twist. Yesterday I told mother that I would be late. God make the world beautiful. ठीक है? अच्छा, after that question number 6 is: Form adverb from the given adjectives and use it in your sentences. आपको ये जो adjectives दिए हुए हैं इनके adverbs बनाने हैं and उन्हें sentences में use करना है. So the first is polite, kind, sweet, easy, luck. पहले आप इनके adverbs बनाएं and then उन्हें sentences में use करें. Exercise 7 and 8 is similar words and homophone. So question number 7 is about: in each line below there are 2 words which are similar in meaning. अगर आप यहाँ पे देखें तो you have 5 lines written below और यहाँ पे हर line में 2 words ऐसे हैं. ओवरऑल आपको हर लाइन में 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं मगर यहाँ पे 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग सिमिलर है. ठीक है? तो यू हैव टू सर्कल दोज वर्ड्स विच आर सिमिलर मीनिंग. ठीक है? जिनके सिमिलर मीनिंग है आप उन्हें सर्कल करेंगे. कन्वर्सेशन, लुब्रिकेंट, टॉक, पर्लिन, नेमलेस, मैड, एनॉर्मस, रिक्वायर्ड, सर्कुलर, राउंड, स्पीक, स्टेशनरी, हाइड, करेजियस, ब्रेव, एंग्री, read, option, read, choice. ये करने के बाद you will do exercise 8 question number 8 which is about homophones. Write the homophones of. You know what homophones are. तो आपको इन 4 words के homophones इनके आगे लिखने हैं. ठीक है? Self, current, force, peace.
So students, thank you so much. I hope you understand all these. Hope you like. So please share and subscribe the channel.